Hello everyone. Today I am here to talk on a very different topic, and yes, it is obviously related to my life. I often keep thinking about what decisions I have taken in past, where am I today, what I could have done, and many more. Okay, but when I see students around me or people around me going through the same phase, I feel the urge to explain them or to give my point of view, but I often don't. That why to speak more. But 3-4 days back, it happened that I went to a college for taking interviews of some students for some reason, and there I came across their thought process and the lack of motivation, clarity, and a lot of confusion or the rigidity. It compelled me to make this video. We often come across this question that where do you see yourself in the coming 5 years, yeah, or 10 years? Whether right from, I would say, right from the class 10th, when you're supposed to take the subject or choose a subject on the basis of which somewhat your career would be based on or will be determined by people or career counselors, your teachers. They ask you to answer this question that where do you want to see yourself in the next 5 years, and then they say that based on your answer, plan your life, plan your these 5 years or 10 years. And if you have a good plan, then only your success is somewhat assured. Okay, and if you don't have a plan, there is a very less chances of your success. Now I would like to ask that do you think that only having a plan can assure you a success? I would say no, and many people might not agree with me. But if you match this statement, bookish statement, with the reality of life, many of you find the result completely different. Why? Because yes, in books, in the hypothetical situations when all the factors are controlled by you, the plan can of course lead to success. But in life there are a lot of factors that are not in your control. As you live your life, you don't know there is another plan that is there, and that is a bigger plan, and it is of God. You don't even know that what might happen and what not might happen that you have planned for. And what is important, what I think that determines your success, is your ability to deal with those plans, with the reality of life. Yes, of course, you should have your ambitions, your dream career, and you should work for them. But don't be rigid that only if these plans, the plans that I am having, the career path that I have chosen, the things that I have thought of doing are accomplished, then only I will be successful. Why? Because there are a lot of factors that might help you if you are lucky enough to achieve those dreams and plans, and there are a lot of factors that might become a hurdle in your plan, and you might have to change your plan or stop working on that and go to plan B. And if you are stuck, you have this rigidity that no, I will take only what I want, then I don't think that life works that way. Yeah, so a short example of my life that I might think will explain you this purpose of this video completely. Life plan, it was perfect. I had a perfect husband, I had my baby, I had a good family, I had good financial support, I have every kind of perfection, I would say, except the career satisfaction. But okay, I made somewhat peace with that because Shivam and I was working on that. And then this tragedy entered that Shivam left. The person for around whom my life was roaming, मेरे सारे decisions जिसके according होते थे, अब वही नहीं रहा. So पर्पस ऑफ माई लाइफ वेनिश्ड. मेरे पास अब कोई एक वो नहीं था कि किसके लिए मैं डिसीजन लूँ, कि अब मेरे आगे लाइफ में क्या है, कुछ भी नहीं था.
But yes, I had my baby to go on, to carry on. And again, just within a 6 month of this tragedy, I stood up so that मैं डिप्रेशन में नहीं चली जाऊँ. आई हैव बीन रीडिंग इन साइकोलॉजी कि अगर ऐसा कुछ भी होता है, जस्ट स्टार्ट गोइंग आउट और चेंजेस लाओ, एक्सेप्ट करो चेंजेस को. क्योंकि मुझे पता था इट वॉज ईजी फॉर मी टू गो इन टू डीप डिप्रेशन एट दैट टाइम व्हेन माई चाइल्ड नीडेड मी द मोस्ट. तो मैंने अगेन आई जॉइन द कॉलेज, बट देन आई रियलाइज इट सून दैट माई बेबी इज टू young, and being a single parent, I cannot afford to go out in a job and work. Many people would say that you have a family support, you could try doing that, but everybody has a different set of situations. और at present I feel that this is the right decision. तो मैंने अपने डांस क्लासेस स्टार्ट किए which I can operate at my own pace and with my own comfort, right? So again, I have switched to completely a different career. But in short, I would say that just think that what I thought and what my life became. और अगर मैं rigid होती कि नहीं, मैंने तो सोचा था that I would have a perfect husband, a child and a perfect life, और अब मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूँ? तो कुछ और होता है. ऐसा नहीं है दैट आई एम नॉट गोइंग थ्रू अ काइंड ऑफ डिप्रेशन या मुझ में सैडनेस नहीं है, ग्रीफ नहीं है. देयर आर सम डेज दैट आर वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट आई फाइंड माई सेल्फ स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लकी कि मैं फिर भी बहुत अच्छे से कोप अप कर पा रही हूँ. एंड आई गिव माई सेल्फ स्ट्रेंथ दैट येस यू आर डूइंग बेटर. एक दिन और ट्राई करते हैं, एक दिन और ट्राई करते हैं. सो वट आई हैव लर्नड विद दिस experience and from this life is that you cannot say that what plan I have for the next 5 years, because if that is not accomplished due to any reality life reasons, आपके अंदर एक सेंस ऑफ फेलियर आएगा. आज के टाइम में हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको फील कराते हैं दैट यू आर अ फेलियर, यू आर नॉट डूइंग गुड. देयर आर वेरी लेस पीपल दैट एनकरेज यू दैट ओ वट एवर यू आर डूइंग इट इज गुड, एटलीस्ट यू आर स्माइलिंग, दैट इज ऑल्सो इनफ, एटलीस्ट यू आर मेकिंग समवन स्माइल, दैट इज ऑल्सो इनफ. पर हमको कोई ये कहने वाला नहीं होता. बट इफ यू मेक समवन एंग्री और क्राई इवन वंस, 10 people will come and make you realize that see what wrong you have done. In this scenario, if you keep high expectations, okay, even if you keep high expectations and you're rigid about that, no, that if I want that only, then there are a high chances that if in any case, even if there are 1% chances कि आपको वो नहीं मिलेगा, you might go into depression और ये जो आजकल सुसाइड्स बढ़ रहे हैं, यू माइट फील एज अ फेलियर, यू आर नॉट केपेबल, विच एक्चुअली इज नॉट द केस. सिर्फ करियर में सक्सेसफुल होना, आपकी कैपेबिलिटी आपके सक्सेस रेट को डिफाइन नहीं करता है. आपके लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं. अगर आप उनमें से एक में भी सक्सेसफुल होना तो आप सक्सेसफुल हो. अगर आप अपने आप को खुश रखने में सक्सेसफुल हो तो आप सक्सेसफुल हो. आपकी फैमिली लाइफ अच्छी है तो आप सक्सेसफुल हो. तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ करियर ही डिसाइड करेगा कि आपका सक्सेस रेट क्या है. तो जितने भी आज के स्टूडेंट्स हैं, आई वुड से दैट येस इट इज़ गुड कि आप बोलो कि मुझे ना इस पर्टिकुलर फील्ड में ही जाना है, या मुझे तो यही सब्जेक्ट चाहिए, या मैं करूँगा या करूँगी तो ये ही करूँगी. दैट इज़ वेरी गुड टू बी डिटरमाइंड. बट if when I ask students that if I am not giving you the subject or opportunity to work in that particular field only, then what? And they were like कि no ma'am, नहीं चल पाएगा. तो क्यों नहीं चल पाएगा? आपको पता है लाइफ कितनी बार चीज़ें चेंज कर देती है. और अगर आप बोलो कि नहीं यार इस सिचुएशन को तो मैंने इमेजिन नहीं किया था, दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांटेड एंड ये नहीं चल पाएगा, देन ऑब्वियसली दिस विल इंक्रीज द सुसाइड रेट. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज़ ये जो फियर्स है ना ऑफ बीइंग जज्ड, ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड, कि अरे इफ आई डू दिस माई फैमिली विल बी डिसअपॉइंटेड. फैमिली इज़ ऑल अबाउट दे वॉन्ट टू सी यू हैप्पी एट द प्रेजेंट मोमेंट. वो आपको समझ नहीं पा रहे होंगे, बट इफ़ यू चूज़ अ पाथ, अ करेक्ट पाथ दैट इज़
at last making you happy, you will end up making your family happy, because you'll not be in frustration, in depression, in irritation, and that will only increase the love and attachment with your family. तो अगर फैमिली का सिनेरियो है, प्लीज़ ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस कि उनके एक्शंस कुछ होंगे, इंटेंशंस ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये होंगे दैट दे वांट टू सी यू हैप्पी. तो उस टाइम अगर आप थोड़ा सा अपने लिए सोच लोगे, इट इज़ नॉट बीइंग सेल्फिश. सेकेंड, अगर आप फ्रेंड्स सोसाइटी का सोचो, प्लीज़ मत सोचो जब आगे जाके आप कभी ऐसे करियर में फेल हो रहे हो जो आपकी चॉइस का नहीं था, तो वो ही लोग होंगे जो आपको फेलियर का टैग देंगे. वो नहीं आएंगे आपको पैसिफाई करने की अरे यार व्हाट यू आर फीलिंग, ऐसा क्यों हो रहा है. नो. सो ऑलवेज प्लान योर फ्यूचर एंड हैव दिस प्लान ऑफ 5 years that I see myself happy in whatever situation is there after 5 years, or not happy, because if मैं अपनी खुद की बात करूँ, I would not say that I am happy, but at least I am surviving. So you should always have this strength and this hope and this willingness that yes, we can do and we will do anyhow, we will manage to do. आई नो ये थोड़ा सा फिलोसफिकल व्लॉग होगा, बट आई फेल दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज जनरेशन, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर करियर के लिए भाग रही है, जिसके लिए सिर्फ करियर ही इंपॉर्टेंट हो गया है. See, at present, I don't have a good career. I don't have a good personal life. So I might consider myself as a failure. I do consider myself sometimes as a failure. Let's see what my life is. But then when I see on the positive aspect that at least I'm able to survive and coping up in this situation, then yes, I expect, now I have lost faith कि लाइफ में अब इसके बाद सब अच्छा ही होगा क्योंकि इतना बुरा हो गया है. आई एक्सपेक्ट कि इससे बुरा भी हो सकता है, बट आई एम लाइक कि ठीक है, हो रहा है ना, अगर मैंने ये कोप अप कर लिया ना, आई विल हैव द स्ट्रेंथ टू कोप अप अदर थिंग्स ऑल्सो. बट एंड आई एम making myself so flexible to accept the change and to be ready for the change कि ठीक है, to have a plan is my responsibility, but if life aligns with your plan, it is not certain, so you have to be ready for the uncertainty. अब आई डोंट नो कितने लोगों को ये हेल्पफुल लगता है, कितने लोगों को नहीं. इट वॉज जस्ट माई अर्ज कि आई शुड शेयर दिस विथ यू ऑल, सो आई शेयर. आई होप यू हैव अ गुड एंड हैप्पी एंड अ satisfying life, and all the best. Bye bye. So yes, stay tuned for my next video, and if you like this video, do like and share it, and also subscribe my channel for more such videos.